Yes or no? Make it comfortable. So if I ask you a question, has this been comfortable or complicated? So if you say both, then you are very diplomatic and smarter. इंटरव्यू में आप लोग पास होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है? Because you are trying to, you know, सामने वाले को नाखुश भी नहीं करना है और खुद की कमी कमजोरी को सफाइस भी कर देना है। आप में से कितने लोगों को ये आवाज किसका? इसको बंद कर दीजिए, एलईडी। I want you to repeat this word, ठीक है? ओम शांति। बोलिए, प्यार से बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए, मुस्कुरा कर। कुछ लोग बोल रहे काय को मुस्कुरा के, जबरदस्ती बैठे हैं यहाँ पर। आप में से कितने लोग यहाँ जबरदस्ती बैठे हैं? जरा हाथ ऊपर उठाना। Yeah, please raise your hand. What this is? ये साउंड किसका है? ओके, ओके। हाँ, कितने लोग जबरदस्ती हैं? 1 2 3 1 2 3। Let me make it comfortable for you friends, ठीक है? Not necessarily कि आप ही यहाँ जबरदस्ती में हो सकता है मैं भी यहाँ जबरदस्ती हूँ। आपके टीचर्स ने आपको धक्का मार के, मुझे भी मेरी टीचर ने कहा चलो प्रोग्राम, क्या कर सकते हैं? दो ही ऑप्शन है। जब कोई चीज जबरदस्ती होती है and it is beyond your control, you have only 2 choices. Either you sulk, you brood, you bother yourself, you frustrate yourself, you get irritated, cry, criticize, complain, irritate, frustrate. Choice number 2, बैठ के सुनना तो है और मुझे सुनाना भी है। Choice number 2, प्यार से, शांति से, खुशी से, आनंद से झेल लो, झुला लो। Which is a better choice? Choice 1 or choice 2? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए। Choice 2। इसमें पता चल रहा है कि वो भी जबरदस्ती बोल रहा है, वो भी थोड़ा मुस्कुरा के बोल रही है। So this is it. Friends, I'll try to make it as light, as simple, as interesting as possible, and the rest will depend on you. So if you also pose a lot of questions, I'll be very happy. Generally, when I speak to my audiences, I tell them that I like a very noisy class. Noisy class is not a fish market scenario. A noisy class means when you are actually thinking a lot. And if I need to tell you about logical mind, if you have to go to a stationery mart and buy a 5 rupee pen, 5 रुपए का पेन भी खरीदना होगा, ऐसे ही नहीं खरीदते, स्क्रूटनाइज जरूर करते, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। Yes or no? 5 rupees is nothing, friends. आपके हॉस्टल रूम में 5 रुपए के कॉइन इतने सारे होंगे जो आपको भी नहीं पता है। CBI रेट लगाऊंगा तो बहुत सारे 5 रुपी कॉइन मिल जाएंगे and you don't even know about it. 5 rupees is nothing, but still, while you are buying a purchase decision, making a purchase decision, you will scrutinize it. And when we are speaking about science and spirituality, I have a request. Please don't accept anything what I have to tell you. Please evaluate it thoroughly. सुन लीजिए, सोचिए, evaluate करिए. The purchase decision has to be only one. Is it going to add value to you? If yes, buy it. If no, leave it. As simple as that. And that's what you do most of the time. Everyone does the same. Yes or no? Yeah. So, let me ask you one question. I mean, I know you are too young to respond to it, but suppose this is an interview
You cannot ask the interviewer why this question. He may have some solid reason behind it. So my first question to this wonderful scientific audience, what according to you is spirituality? साइंस तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? इधर है ये बच्चों, कम दैट इज कराची, प्लीज. The connection of our Sit own and speak. connection of our own spirit to the ultimate spirit. यहाँ हेलो यहाँ 3 से 30 सेकंड. हाँ वो या जो से Connection of our own spirit to the ultimate spirit of God. अच्छा, आपके लैंग्वेज में स्पिरिट का दूसरा भी एक अर्थ है. Soul sir. अच्छा वो वाला स्पिरिट नहीं है, ठीक है. यहाँ तो बच्चा परेशान है, बोला भैया एक स्पिरिट ले लेता हूँ, छोटा पैक. क्या कनेक्शन होता है, चिंता खत्म, टेंशन और इतनी अच्छी अनुभूति होती है. आपको लगता है स्वर्ग जन्नत यहीं पर है. ये बेचारा टकलू क्या क्या किया होगा 25 साल पर, बकवास है, 2 मिनट में हो जाता है. स्पिरिट कनेक्शन, दैट इज नॉट दैट ना. वंडरफुल. It's the soul with the little self with the higher self. मैं बच्चों लोअर केजी वाला प्रश्न पूछ रहा हूँ और भाई साहब हमें पीएचडी का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना. Anyway, I really am impressed by क्या कनेक्शन है इनका. और बताइए, what do you understand by spirituality? बाकी बच्चे सोच रहे हैं टकलू कितना प्यार से उसने उत्तर दिया, तूने तो उसकी हालत खराब कर दी. अब ये जवाब सुनकर हमारे में कॉन्फिडेंस की ना थोड़ी कमी आ रही. भाई तुमसे एंगेज नहीं कर सकते, आप चालू रखो. Maybe the 1 hour will walk out royally, but we are not ready to engage with you. What is spirituality? Connecting our souls with the divine itself. Fantastic. Connecting the soul with the divine. Purpose of one's life. Fantastic. Finding what's the purpose of human life is. Wow, very good. I'll tell you very simple friends. 2 basic premise of the definition of spirituality. What all you have said is absolutely correct. But prior to that, we need to make it very easy. The first definition of spirituality is to make life easy. That has been the primary objective of all pursuit of human existence, right from anthropology, sociology, pharmacology, psychology, artificial intelligence, big data, you name it right now. All the contemporary sciences, quantum physics, quantum mechanics, quantum computing, the latest, with all the traditional mindset. मानव जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है, मानव जीवन आसान होना चाहिए. और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि जिसने भी बनाया ना, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं तो पाँव ही पकड़ लूं. क्योंकि अगर ये नहीं होता था तो मुझे चिल्ला के बात करना पड़ता था 1 घंटा. My vocal cords have said, hands up Gireesh, because I do multiple programs a day. This is science, made my life easy as a teacher, as a speaker. Kal I had a little headache, one maybe a painkiller. The entire pharmaceutical industry, those who have researched alpha testing, beta testing, animal testing, कितना मेहनत किया एक छोटा सा drug बनाने के लिए. I pop it up, maybe within 10-15 minutes, it creates neuroblock. The pain is not experienced and I'm fine. Wow, life is easy. So medical science, too much of respect. So I'll make it a little complicated for you. Okay. Ideally, madam should have made the statement. I don't know whether she spoke in Odisha, the kind of message she should have communicated. But I was expecting her to make a very formal request, and the formal request would have been, audience, please keep your mobile phone on a dash mode. कौन सा mode? Silent. क्या बात है? Why silent mode? क्या होगा अगर किसी का मोबाइल स्टार्ट रिंगिंग बाय मिस्टेक? देयर इज नो इंटेंशन ऑफ एनीबॉडी टू डिस्टर्ब द होल ऑडियंस. गलती से बज गया सर, मुझे लगा मेरा मोबाइल साइलेंट में, बट स्टार्टेड रिंगिंग. ओह गॉड, क्यों ऐसा कहा जाता है मोबाइल फोन को साइलेंट रखो? हाँ जी, स्पीकर का फ्लो ब्रेक ना हो. कैसी? स्पीकर का फ्लो ब्रेक ना हो. आप तरफ पाँव बाहर रखेंगे, छूना चाहता हूँ.
इस मेरी पत्नी से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने वाली स्पीकर का ख्याल रखने। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तुम्हारी होने वाली पत्नी तो क्या पुण्य किया होगा, इसको मेरी चिंता, मतलब स्पीकर का ख्याल। इस घोर कलयुग में किसी को मेरी चिंता। माय गॉड, नाम बताएं क्या बात अपना? दीपक कुमार। इनके लिए ताली बजता है। Deepak, what do you study? Computer science. Computer science. Which year semester? First year, second semester. फर्स्ट ईयर। तभी मैं सोचूं ऐसे कैसे चौथे सेमेस्टर में पहुंचते पहुंचते ना पता चल जाएगा आपका ये अच्छा स्वभाव और संस्कार की धज्जियां उड़ने वाली है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। आई एम सो सॉरी इफ आई एम इंसल्टिंग द एजुकेशन सिस्टम। आई वाज अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। आई हैव सीन, अभी नए नए होना 2-4 साल में पता चल जाएगा, ठीक है। एनीवे, ओके। अच्छा, मोबाइल को साइलेंट क्यों कहा जाता है करने के लिए? क्योंकि the speaker as well as the audience will get disturbed, right? Disturbed and distracted. Yes. I have a request. वो तो उनको कहना था कि मोबाइल फोन को साइलेंट करो। Can I request? Please don't keep your mobile phone on a silent mode. Let it be on an active mode. बजने दीजिए। और जब मैं ये कहता हूँ ना, सबसे पहली बार लोग मुझे सीरियसली घूर के देखते हैं। और पता है वो मन में क्या विचार करते हैं मेरे लिए? टकलू लगता मेरे जैसा है और कपड़े अपने अलग पहना, ब्रह्माकुमारी स्पिरिचुअलिटी है अपनी जैसा, इसकी भावना भी हमसे मैच करती है। दैट इज इंटरेस्टिंग। Yeah, I mean, it will look like a spiritual person wearing this attire of white, a badge and heavy background. जो भी मेरा प्रोफाइल आपको अगर पता चला, बट इसके ख्याल हमारे जैसे मैच करते हैं। So I have a request. Please keep it on an active mode. Don't keep it on a flight mode, silent mode, vibratory mode, do not disturb mode. जितने भी modes आप लोग इसमें, please don't keep it ring. पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का तो रिंगटोन उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करके डाउनलोड किया और अब कोई सुने और डिस्टर्ब हो, ये कैसे हो सकता है? अरे हमने तो 1000 रिंगटोन सेलेक्ट, ये ठीक है, नेक्स्ट, ये भी ठीक है, नेक्स्ट, ये भी ठीक है। Yes or no? Okay. So let it ring. I have a request. Can I request? For the next maybe around an hour or so, please keep your mind on a silent mode. बच्चों, डिस्टर्बेंस वहां नहीं है, वो तो स्टिमुलाई है, वो तो ट्रिगर है। डिस्टर्बेंस तो इधर है। यस और नो? 1 घंटा बहुत दूर की बात है। लेट मी चैलेंज यू, द नेक्स्ट 5 minutes, 300 seconds, keep your mind on a silent mode. Let it not get agitated, nor of the past which you have no control about, neither the future which is unknown, equally for me and equally for you and equally for the whole planet Earth में जितने लोग हैं, किसी को नहीं पता अगला क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। But the challenge is everybody is worried क्या होगा, क्या करे, क्या नहीं करे, and the reality is nobody knows what's going to happen the next moment. I have no idea whether you wear white, whether you are 50 years of spiritual understanding, whether you are the best scientific acumen वाले व्यक्ति हो, nobody knows what's going to happen. You can predict, you can plan, you can organize, you can hope. ये सब क्रिएट कर सकते हो, गारंटी नहीं है। There is a limitation to your science. There is a limitation to my spirituality, and the limitation comes because we don't understand what the reality is. जीवन की वास्तविकता कोई नहीं समझता। Question, मन को साइलेंट कर सकते हो? I'll tell you something more interesting. I was doing a program in Hyderabad as a hospital called as AIG, Asian Institute of Gastroenterology, and a huge auditorium. There were surgeons, paramedics, doctors, nurses, and when I was talking, someone's phone started ringing, and they were very serious people.
So the master of ceremony, he took the mic from me and said, please, my dear audience, we just don't want any disturbance, neither the speaker nor the audience. Please keep it on a silent mode. So I took the mic and I said, please don't keep it on a silent mode, keep it on a silent mode. So the very senior cardiologist, I mean, he's an honorary professor there. So he raised his hand. I said, sir, please go ahead. What's that? What do you want to communicate? He said, my grandson, मेरा पोता दूसरी कक्षा में पढ़ता है 6 साल का, वो भी मोबाइल फोन को साइलेंट करना जानता है. उसको टेलीकम्युनिकेशन का ABCD नहीं पता, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं पता, सेकंड स्टैंडर्ड and maybe has not even started mathematics. And this granddad is saying, मेरा छोटा पोता को 3 सेकंड लगता है, switch on, drop down, mute button, and perennially this phone is not going to create ऊँट तक का भी आवाज नहीं आएगा until unless you consciously go and change the mode. Yes or no? Yes. I said your observation is perfectly right, sir. Look at the convenience. A little one, a tiny dot can book different modes. क्या convenience है, क्या easiness है. मैंने कहा सर आप पूछना क्या चाहते हो? You know what he asked me? I'll ask the same question to you, friends, and I want an answer. I mean, think about it. I don't want a right answer, friends. I just need an answer. Here, right and wrong makes things very complicated. In the sense that हम right के चक्कर में right भी नहीं कर पाते. We are so pressurized because of that right. At least यहाँ पे तो बोलो तो सही आप. हमको बोलने में भी डर लगता है कि अगर बोल दिया और साहब ने हमारा मजाक उड़ा दिया तब तो बच्ची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी. मतलब ज्यादा कोई इज्जत है नहीं, थोड़ा बहुत जो है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी. आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. पता है वो डॉक्टर साहब ने मुझसे क्या पूछा? उन्होंने कहा सर आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट. आई सेड परफेक्टली फाइन. बोले मैंने इतने ऑपरेशंस किए, आप मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी शरीर के अंग मुझे पता है. मैंने कहा perfectly fine, but what's your question? उन्होंने कहा प्लीज बताइए यहाँ कौन सा बटन दबाऊं. मन साइलेंट हो. अरे वहां इतना इजी, फ्लाइट का अलग बटन, साइलेंस का अलग बटन, म्यूट का अलग बटन, यहाँ का बटन. साइंस, मेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, टेल मी द बटन. And that is where it is so complicated, friends. And that's where I was asking this question. Is it convenience or is it disturbance? And that's where the whole complication is. And you and I want to make my life absolutely fantastic, easy, brilliant, beautiful, magnificent. But that's not what it is. It is coming with a rider, star conditions apply. It comes with so much of complexity. Every moment, I mean, it's doubt. So on one hand, life seems to be very convenient. But on the other hand, it is equally complicated. And why it is complicated? Because when I am speaking about science and spirituality, we have invested very heavily in the human intelligence or scientific development, scientific acumen, scientific growth. But when it comes down to spirituality, we have a very strong aversion for it. ये हमारे लिए थोड़ी ना है. ये तो 60 साल के बाद है. 60 साल के बाद बचेगा ही नहीं स्पिरिचुअलिटी को. गाड़ी गराज में है, अब आप उसको दौड़ा रहे हो. डायबिटीज, पैनक्रियास, हार्ट अटैक. Let me tell you, friends, science and spirituality. I had the privilege of working with Dr. APJ Abdul Kalam for 8 years when he was not even the president of the country. He was only the chief of DRDO. Believe me, friends, I wish you should have met Dr. APJ. Such a fantastic person. A proper blend between science and spirituality. Very humble, very polite, very down to earth. You would not realize you are with such a great personality. He'll make you so comfortable. But at times we carry our ego. मैं कल आपको दीपा दी. I don't know how many of you attended yesterday's session. But मैं क्या है ये मैं? Just a little extra information, Dan Gireesh, that you know more about computer science that I don't know. That's it. You know the greatest difference between information and knowledge. And unfortunately, we are miles apart by these two concepts.
We are very well informed, but when it comes down to knowledge, I have serious doubt. I mean, it's not about you, it's about myself also. It's about, I'm speaking about how the society is operating. You know, I come from a state called as Kerala, it's South India. Although मेरा जन्म और मैंने पढ़ाई वगैरह सब नॉर्थ इंडिया में किया, मुंबई में किया, but my ancestral roots are from Kerala. And I am very bombastic about Kerala. मैं तो मेरा केरला के बारे में आप में से कोई है यहाँ पे from the state of Kerala? Anybody? अच्छा नहीं है. I wish I could have had somebody so that I could have validated from that person. But still you can go back and check. तो जब भी केरला के बारे में बोलते ना मेरा तो सीना तन जाता है, मैं बलून भर जाता है मेरा दोनों चेस्ट. Fantastic. You know why? And I would justify it because Kerala is number one state in the whole of country with maximum 100% literacy. I understand this. This करना पकड़ right. 100% literacy. I was doing a program for Nuclear Power Corporation of India Limited long back, and believe me, friends, I have a lot of respect for scientists. So there was a Mallu scientist out there, and I was just speaking about the difference between information and knowledge. मैंने कहा केरला 100% literate. केरला में United Nations का group of countries में India is one of the country. I mean, they have certain parameters on the basis of which they will evaluate and they will say this country is number one, this country is number two. बहुत सारे indexes को बनाते हैं. If one of the indexes, India was number one, Kerala was number one. There is a district in Kerala called as Patnai number one, and it boasted of 0% child mortality. बच्चे वहाँ मरते नहीं हैं. The mothers, pre-birth and post-birth, they know how to take care of the baby. So well informed. You come to Bihar, you come to UP side, oh my God, during delivery itself, there is so much of loss. But that district, 0% child mortality. I was speaking about Kerala. जैसे ही मैंने ये दो बातें कही ना, तो वो जो साइंटिस्ट बैठे थे उन्होंने कहा गिरीश आपको तो दो ही विशेषता पता है, मैं आपको और दो बताता हूँ. मैंने कहा थैंक यू सर, 4 feathers in my cap. अब तो मैं नॉर्थ इंडिया वालों को जाके और ज्यादा अच्छी तरह सुनाऊंगा. मेरे को दो ही पता था, 4 पता चल जाएगा. मैंने कहा बताइए. Today the two findings what he told me, friends, Kerala is not number one, but at that time it was number one. You know what he told me? He told me Kerala at that time was number one in the whole of the country with maximum consumption of liquor. Now it is Punjab. पता है शराब कौन पीता है? BSc केमिस्ट्री, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अल्कोहल, सब जानकारी, लेकिन पीता हूँ. जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है फ्रेंड्स, and that makes you different from the whole world. He said fourth, मैंने कहा बताइए. Kerala is at that time was number one. Now it is I think Maharashtra. Kerala was number one at that time with maximum suicide cases. और पता है वहाँ पे फांसी में लटक के कौन मर रहा है? BA साइकोलॉजी. साइकी ही फिर रही है और उसके बाद ऑप्शन नहीं है भाई टू किल माइसेल्फ. क्या साइकोलॉजी में पढ़ लिया? It's all very bookish. And he gave me an additional one more. मैंने कहा बताइए. And this is far more true maybe a couple of years back तक, अभी भी छोटा मोटा होता होगा. And he said it is not Dantewada, it's not Gadchiroli, it is not Srinagar, it is not Kanpur, it is not Meerut, it is not Muzaffarpur. Number one district, and I hail, that's my hometown, number one district in the whole of the country with maximum political killings. आज यहाँ CPIM का एक व्यक्ति बोलो ना सब्जी की तरह काटेंगे, कल वहाँ पर बीजेपी वाला या फिर इंडियन मुस्लिम लीग वाला या कांग्रेस वाले के 2 लोगों को वो काटेंगे. And this is Kerala, Kannur. Check. क्या 100% लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं? You can kill someone. You don't even feel. You're so, obsessed with the political ideology you represent that you have no other choice. अरे आपका thought processes कहाँ पर? My dear wonderful audience, there's a big difference between information and knowledge, and somewhere I think we are so, we take it so lightly about information. मालूम है.
मुझे मालूम है सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन पीता हूं। हेलो, एंड इफ आई पुट इट इन लाइक, मुझे मालूम है डर के फायदा नहीं है, लेकिन डरता हूं। मुझे मालूम है गुस्सा अच्छा नहीं है, लेकिन करता हूं। मुझे पता है खुशी से सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन खुश नहीं रह पाती। मुझे पता है बड़ों का आदर सम्मान करना वो प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया है, वो सही है, वो गलत है, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन गुस्सा होता है। और पता है मैं आपके बारे में बताऊं, सॉरी मैं अपने बारे में बताता हूं, ठीक है? मैंने एक रियल टीचर रहा हूं। आई हैव टॉट इन मुंबई यूनिवर्सिटी थैंक्स टू ब्रह्माकुमारीज। आई वाज नॉट अ टिपिकल टीचर। All the, with due respect to all the honorable teachers here, I'm not here to disrespect anyone. भाग्यशाली बच्चे और सही समय पर हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। लेट आए लेकिन जरूर, और वैसे भी चीफ गेस्ट लेट ही आते हैं। Anyway, I never used to get angry at my students. So a typical teacher, you know. I don't know आपने observe किया है नहीं किया है, आते और they will discuss the first day of the college and the teacher will say, my name is so and so, I am your XYZ subject professor. This subject will entail around 40 hours of theory class, 2 practicals, 1 presentation, 1 group presentation, 2 quizzes, 1 surprise test, blah blah blah, the entire bit of what we will engage with. Yes, and once they done, and then the teacher would say 60 marks university paper, and finally सबसे खतरनाक इंफॉर्मेशन 40 इंटरनल मार्क्स मेरे हाथ में। अभी तक सब ठीक है। ये वाला जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करके देखो वस्तुएं भी हिल जाती है। इंफॉर्मेशन इतना भारी, आप लोग को ऐसा होता है? हेलो, यस और नो? नहीं, अच्छा यस। और जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं ना, ये बेचारे सबसे पीड़ित हैं। दे कैन रिलेट टू इट। बिल्कुल करेक्ट सर, दिल को छूने वाली बात कर दिया। एंड फर्दर द टीचर वुड गो एट 40 इंटरनल मार्क्स क्या है? 5 marks फॉर अटेंडेंस, 5 marks for punctuality, 5 marks for your attitude, 5 marks for your class participation. पीछे बैठकर बंदा फ्रेंड को पूछता है करना क्या है? क्या एटीट्यूड एटीट्यूड? अरे पढ़ाओ खत्म करो, हमें आंसर लिख देंगे, गिव मी द मार्क्स, व्हाट एजुकेशन। आपके बारे में नहीं कह रहा, आप तो ऐसे विक्टिम्स हो। And here enters Gireesh professor, thanks to my heavy spiritual background, and I'll also say the same thing, blah blah blah, itna theory classes, presentation, and finally the Brahmastra, 60 university marks, 40 internal marks, तुम्हारे अकाउंट में टॉप अप कर दिया। प्लीज डोंट टेल मी कि आपने इंजीनियरिंग जहां से भी किया है with a gold medal and you worked with Google India for almost 2 years with 2 years of experience, and then you are entering into my MBA program and this is what you are. Please don't tell me, I'm not interested. Don't tell me. पता है क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स के लिए गुड मॉर्निंग सर, हेलो सर, नो सर, बिल्कुल सर, हो जाएगा सर, कर। तुम्हारा गुड मॉर्निंग 5 मार्क्स वाला नहीं चाहिए। I'm just not interested. तेरे को दे दिया, I don't control you. आंखों में आंखें डाल करके ना बिंदास मेरे को कहना बाजू व्हाट प्रोफेसर और निकल जाना। I just don't mind because I don't beg it. Can I ask you a question, friends? Is punctuality worth 5 marks? Hello? Is punctuality worth? Who is devaluing it? अरे punctuality is too valuable a stuff where you and I am equating with 5 rupees. And believe me friends, if you can't learn it, the whole lifetime वो 5 marks का बंदूक which the teacher is holding now, tomorrow your boss will hold it,
tomorrow your reporting manager will hold it. After that, your wife will hold it, your husband will hold it, your bacha will hold it, your mother-in-law will hold it. The entire lifetime, you and I will live a life out of slavery. और एक समय ऐसा आएगा when out of sheer frustration you come in, चाहिए क्या जिंदगी, सब अपनी अपनी चला रहे। सोचो, आपने क्या कर दिया? वो टीचर ने जबरदस्ती आपको पता है वो टीचर आपको 5 मार्क्स का बंदूक क्यों लगा रहे हैं? I'll give you an example. So Gireesh would say 5 marks तुम्हारे अकाउंट में, 40 marks अकाउंट में टॉप अप कर दिया। You do your homework, you do your assignment, you come on time, you come royally late. Your life. My job is to only inspire you, motivate you, and tell you punctuality is very valuable. You understand it, you learn it. I can only tell you, your choice. Anyway, पता है मेरा क्लास मॉर्निंग 8 o'clock हमारा 3 घंटे का सेशन होता है और मेरा स्टूडेंट है ना थर्सडे को मेरा फर्स्ट मॉर्निंग क्लास होता था। बाकी दिन में ये बच्चा 8 बजे का क्लास अटेंड करना है, सुबह 7:30 बजे उठता क्योंकि रात को सोता ही 3 बजे। उठते ही साथ उसको ओह माय गॉड हाफ एन आवर ऐसे ही जीन्स पहनता था, टी शर्ट पहनता था, अपना क्या बोलते सूट पहनता था, बैग लेता था, भागता था। उसका रूममेट पूछता भैया नहा तो ले। वो कहता था तू है ना म्युनिसिपैलिटी का पानी से नहाता है, 2 पैसा लीटर और मैं पता 180 रुपीस 200 ml। तो जो हंस रहे हैं ना ये सब अनुभवी है। एंड वो भागता है अपने हॉस्टल रूम से कॉलेज के क्लासरूम तक। 15 साल से बजाज ऑटो चलाने वाले के इसको देखता है, इज रनिंग फास्टर देन द बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का इंजन इज वीकर देन इसका इंजन। एंड एट एक्जैक्टली 7:59 AM दिस गाय क्रॉसेस द लक्ष्मण रेखा। और वो मैडम को देखता है 5 marks। The whole orientation is towards marks. मैडम ने सही कहा। Oh God, she is so honest. And हम एंट्री किया 5 marks बच गए भैया। वही ये है हमारा मोरालिटी और एथिक्स और एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड 5 marks बच गए। गिरीश के क्लास में यही बंदा 8 o'clock से 9:30 तक पढ़ना पाता, then 15 minutes break, another पढ़ना पाता। So this guy enters royally at 9:30 को। अब हमारा ब्रेक चल रहा है, सब लोग बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं, and this guy walks in बहुत अच्छी तरह नहा धो के फ्रेश और मेरे पास कहते हैं सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, चीफ के साथ बैठिए, ठीक है ना। बोला सर आपसे 2 मिनट दिल की बात रूबरू कर लूं। मैंने कहा बोलिए। बोला सर आप कितने अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा थैंक यू सो मच। क्यों? बोला हफ्ते में 1 ही दिन नहाता हूँ सर, थैंक्स टू यू। और कहता है सर मेरी इच्छा है मैं 2 दिन नहाऊं। मैंने कहा मैं क्या करूं, आपके जैसे एक और नहीं मिल सकता है। मैंने कहा प्रार्थना कर, रिक्वेस्ट कर मेरे जैसे। बस सर आपके खानदान में आपके कोई भाई नहीं है, आप उसको भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ वीसी साहब को, इनके भैया को भी यहाँ पे टीचर बना। मैंने कहा तुम इतना कंसर्न है ना। I said please sit. Can I ask you a question, friends? I mean, it looks to be very glorious, but the understanding is very heavy. What I gave my student is freedom. You walk in at a point of time, no marks. You come at 9, you come at 8, you come at 9:30, same. Yes or no? And the first thing this boy did, when I gave him the freedom, the first thing this boy did was to misuse it. The moment I let you loose, the first thing you're going to, with due respect, the first thing you're going to do is to let loose. That's precisely the reason. The moment you enter after your 12th standard, first year engineering, पहला चीज बंदूक, because you understand that language, and you and I will always criticize democracy, Article 21 to 25, one fundamental right. Yes. Do you have the guts and the temerity to play with freedom? That's where self-discipline.
Can I come to the class on time at sharp 7:55 a.m. because Gireesh loves punctuality, period. You award me, you reward me, you reprimand me, you punish me, you call me the most sincere student, never ever Gireesh came late. I am just not interested. Gireesh is equal to punctuality. That's the value system I create. Now tell me, friend, how do you inculcate this? Gireesh is equal to respect and regard for all the teachers. Gireesh is equal to love for the subject. Gireesh is equal to no frustration, no irritation, no fear. पढ़ाई करनी है ना, एग्जाम ही लिखना है ना, डर किस बात का? Spirituality is having that knowledge. And you know what is the difference between information and knowledge? Knowledge is power. The power to do the right and to abstain from the wrong. मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसके लिए ना आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए फ्रेंड, इसके लिए ना पावर चाहिए. That determine power. Come what may, the whole world may lure me, the whole world may distract me. हाथ नहीं लगाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, स्वाभिमान, अपने अभिमान में रहूंगा. ये कहां से आएगा फ्रेंड्स? 4 years of engineering with due respect. Because you are not exposed, you don't have time. I mean, I don't want it also. I am so busy with all those things. समय कहाँ है? And maybe there is no willingness. Maybe we are not exposed. I find myself so damn lucky. When I was of your age, 22 years, you know, I was accidentally exposed to this Brahmakumaris. Believe me, friends, it changed my life. And you know what is life is? So science and spirituality. The first definition of spirituality is, can you make your life easy? Not that बंदूक में ना friends आप कर तो लोगे, लेकिन खुशी की अनुभूति नहीं होगी. You are working under pressure. इस संसार में वही लोग सफल हुए जिन्होंने बहुत दिल से, प्यार से, खुशी से किया है. No force. They liked it. They loved it. They enjoyed every moment of what they were doing. Maybe in the previous class I told you, लता मंगेशकर कहती थी, मैं जीती हूँ जब गाती हूँ. हम तो मरते हैं जब होमवर्क करते हैं, हम तो मरते हैं जब असाइनमेंट करते हैं, हम तो मरते हैं जब क्लास अटेंड करते हैं, हम तो मर के ही पढ़ रहे हैं. सॉरी. और उसमें भी डर भी है, सिर्फ मर भी नहीं रहे, डर भी है, क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा. You know, the basic premise of education is to, you know, is to make you free from fear. And let me tell you the basis of fear, friend. मैंने एक बार है ना लखनऊ में, I don't know whether I've shared it with, मैं लखनऊ में प्रोग्राम कर रहा था 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ. 12th स्टैंडर्ड, और टॉपिक था मन की बात. I thought I have to speak about the mind, but then the organizers told me, no, you are not supposed to speak about the mind. The students will speak their mind and you have to respond. I said fine. एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा, I want you to respond to this answer. If you would have been in my position, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ. There is no right and wrong answer, guys. Just keep it aside. Be natural. This is what I think. Say it with a lot of respect and gratitude. Period. You have every right to express yourself. पता है बच्चे ने क्या पूछा? And my dear students, please respond करना. हाथ ऊपर उठाइए और जवाब दीजिए. एक बच्चे ने पूछा, अंकल, 12th स्टैंडर्ड है, somewhere around 17-18 years. उस बच्चे ने पूछा, अंकल, झूठ बोलना चाहिए या नहीं? 1000 students, you are sitting on the stage, the teachers. My answer may influence 1000 students, so I have to be very careful. So this boy asked me, sir, should I lie? If you would have been in my position, friends, what could have been your probable answer? I'm not saying that I need a very impressive answer. It should match my answer. No, I'm just asking you a question, so that we understand how much understanding I have about these beautiful concepts and values about life. Because it's only these values which will sail you through difficult times, friends. Nothing else will. I have seen, you know, today's report. IITs, the last 5 years, 33 suicide. Very alarming. And if I need to include IIMs and NIT, 61 suicide. Last month, February, 3 suicides. और ये बच्चा IIT में मैं उसके पाँव पढ़ लूँ,
मुझसे तो कई गुना ज्यादा वो पीसीएम में एक्सपर्ट होगा ना, मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाया इंजीनियरिंग एंट्रेंस। बट क्या ऐसा सिचुएशन आया कि आई जस्ट कैनॉट विथस्टैंड द प्रेशर एंड आई टेक दैट एक्सट्रीम ड्रास्टिक स्टेप, एंड व्हाट यू लीव इज ओनली पेन। हाउ वुड अ मदर हैंडल? अब पता है मम्मी मुझसे क्या पूछती है, एक बार मेरा बच्चा पूछ लेता, अरे जब पूछ रहे थे तो आपने पीसीएम 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 किया, पीआर के लिए तो बताया ही नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, the responsibility very heavily lies with you and I, the elders. मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, यहाँ के पढ़ो, डरना नहीं, डर को भी दूर करो, डर को भी पढ़ो। आप कंप्यूटर साइंस भी पढ़ो, प्लीज अच्छा पढ़ो, डर को भी समाप्त करो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। एनीवे, आप क्या जवाब देते? जस्ट 1 or 2 wild guesses. Sir, it depends on the situation. If the truth doesn't hurt anybody, then that's fine. बेटा फाइनल ईयर में आओगे ना, उत्तर दे किसी की भलाई के लिए बोला बेटा, झूठ झूठ के लिए वो फुट के लिखा, सचमुच इसका पाँव देखना पड़ेगा। Any other answer? Depends on the situation. Hello, just a guess. But anyway, पता है वो मैंने उस बच्चे को क्या कहा, मैंने कहा 12वीं कक्षा में भी आकर अभी तक डिसाइड नहीं किया, अभी भी तुम कंफ्यूज थी, क्या कर लिया 12वीं कक्षा में? 17 साल तुमने जीवन जी लिया, अभी भी फ्लक्स में क्यों? झूठ बोलना चाहिए या नहीं, कब डिसाइड करोगे? पता है मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा मैं उत्तर नहीं दूंगा, तुम डिसाइड करो। और मैंने उस बच्चे को कहा मैं ये बताऊंगा कि तुमने प्रश्न क्यों पूछा। तो शायद उसके मन में ये विचार आया होगा, टकलू एक तो तू सीधा सीधा जवाब दे देता है, ऊपर से तो प्रश्न का आधार वो बता रहे यार, सच अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी। उन्होंने कहा बताइए अंकल। पता मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा यू कन्वीनियंटली योर वीकनेस मुझसे सर्टिफाई करवाना चाहते हो। हेलो, उसको बताया गया गिरीश इंटरनेशनल बिहेवियरल स्पेशलिस्ट, थॉमस कुक इंटरनेशनल सर्टिफाइड यू नो ट्रेनर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मेरे बारे में। उसको लगा यार बंदा थोड़ा है, झूठ बोलना चाहिए या नहीं। अगर मैं ब्लंटली नो कहता ना, वो दुखी हो जाता, और अगर मैं उसको कहता डिपेंड करता है, वाह सर्टिफाइड, परमिशन ग्रांटेड, वो कह रहा है, और वो कोई साधारण नहीं है, एक भी नहीं है उसके ऊपर, इतना मेहनत किया होगा खोने में। Can I ask you a question? हम सब अपने कमी कमजोरी गलतियों को किसी से सर्टिफाई करवाते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से। Yes or no? Where is science? Science is absolute truth. Spirituality is also truth. But it all depends. यही बच्चा अपने पापा को जाकर कहता है, पापा बोलता है तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा दिस ईयर परफॉर्मेंस? डिपेंड, वो तो टीचर पे डिपेंड करता है। किसी को पापा 2 खींच के देगा, मतलब डिपेंड कुछ नहीं करता, तू पढ़। यस सर, नो, आपकी सिंसियरिटी, आपका डेडिकेशन, आपका परफॉर्मेंस और डिपेंड आप पे करता है। हाउ आर यू टेकिंग इट, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू इट, यहाँ वहां थोड़ी ना डिपेंड करता है। एंड दिस इज वेयर द होल प्रॉब्लम। एवरीथिंग हमारे लिए इज सब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट नहीं है। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल कम ऑन टाइम, एब्सोल्यूट। गांधी जी एब्सोल्यूट। अहिंसा मतलब अहिंसा। I mean, political ideologies we can have a lot of differences, friends. But if you look at that one personality trait of this wonderful person, whether it was good for India, not good for India, whatever it is, let us not get into that debate. But he was so strong. You know, Smuts-Law, South Africa, his first speech, Smuts-Law was every Indian would be fingerprinted.
No Indian marriage other than a Christian marriage is a valid marriage. So a husband and a wife, Hindu marriage, you are not a husband and a wife. A Britisher can enter into your dwelling at any given point of time. You cannot just ask question, hello, your privacy is curtailed. Against that, गांधी जी ने वहाँ के लोगों को कहा we should protest. और वहाँ पर जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा not one of us will give a fingerprint. तो फिर किसी ने कहा अरे वो हमको मारते हैं, हमको टॉर्चर करते हैं, हमको परेशान करते हैं. तो गांधी जी ने कहा सहन करो. कई व्यक्ति ने पूछा हेलो भाई साहब कभी जेल में गए हो, कभी उनके डंडे खाए हैं, भाषण करना बहुत अच्छा है. गांधी जी ने कहा they can break my bones, they can torture me, they can kill me, they can put me in a jail, they can even kill me. I'm speaking about the mindset of Gandhi ji. They can even kill me. And his famous slogan, then they will have my dead body, not my obedience. मानूंगा नहीं उनके नियम. क्या होगा ज्यादा मार ही डालेंगे ना, शरीर ही बना. मैं स्वीकार नहीं करूंगा. He was coming from that background. हमारा वैल्यू सिस्टम. मैंने उस बच्चे को कहा आपको मैं ये बताता हूँ तुमने ये प्रश्न क्यों पूछा. So if I ask you a question, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ in a relationship, husband, wife, mom, dad, children, teacher, students, two friends, one lying to the other person, what is the basis? क्यों कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ झूठ बोलता है? And let me not waste my time. It is done. So please understand, you telling a lie to your mom, the relationship between a mother and a daughter, ऊपर love, I love my mom, I love you, डर भी है. क्योंकि अगर मैंने सच बोला, तो she'll feel bad, she'll cry, her heart will break, the expectation. And look at it, between a daughter and a mother, or between any two people, where is spirituality? More than 99% of fear, they are all imaginary. It's all self-created. It's all because of your belief system. It's not truth. Only 1% is instinctive and protective. And it's instinctive. आप पहाड़ के ऊपर जाइए, आप पर्वत की एकदम चोटी में खड़े होकर नीचे वैली देखिए और आगे बढ़, आपको डर लगेगा. So it's protecting you. But exam का डर is your creation. Exam आपको मारने वाला नहीं है. That's how you have been programmed for exam, for results, for interview. So let me give you last one example, please. Sir, if I am hurt, Yeah. and on the exact same time my mother asked me how are you, Okay. so should I tell her the truth to make her feel sad, or Yeah. This is a very valid question. Can you trust your mom? yes, Yeah. So be very expressive and say, yes, I am hurt, but I can handle myself. Give that confidence that you will not go to an extreme self-doubt of it. बोलते कुछ नहीं हो, और पता है हम लोग कैसे पढ़ते हैं, मुझसे बात नहीं करो, no, कमरे में बात, यहाँ हर्ट वर्ट नहीं समझते हैं. ट्रुथ को इतने कन्वीनियंटली हम है ना. अच्छा एक चीज पूछता हूँ, यू सर डिपेंड्स. Last 1 year, what's your name? Deepak. Through Deepak, I'm asking you. Last 1 year, ऐसे कितने instances आए जहां पर आपको किसी की भलाई के लिए झूठ बोलने का मौका? Hello? Last 365 days, how many instances you got an opportunity where you had to lie and it will make somebody's life grateful? Look at the background of it. Conveniently हम उसका सहारा ले रहे, मौका पड़ा ही नहीं आज तक, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी पता नहीं, but we are so concerned about it. किसी की भलाई, किसी की भलाई, झूठ से हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम झूठ से इतना ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गया है ना. We just cannot think of a life beyond lies. Look at, so conveniently I'm taking the support. In case, in case कितने cases हुए? Anyway, so I'll tell you one second definition of spirituality. Spirituality is truth.
So I have this pen. I'll take your example. ठीक है? I throw this pen up. What happened to this pen? It came down. Why? The G force 9.8 meter per second square. ठीक है? Question. G force किसने बनाया? हाँ जी? जोर से बोलिए. भगवान ने बनाया. क्या बात है? मैडम अपना नाम बताइए. राजेश्वरी. फैंटास्टिक. इसको भगवान जी ने व्हाट्सएप में भेज दिया. मैंने बनाया है. इसको कुछ आता जाता. लुक एट हर कॉन्फिडेंस. क्या कई लोग है ना, कई लोग कहते हैं न्यूटन ने बनाया. हमने कहा भाई साहब मेरे बच्चे कुचे का थोड़ा ध्यान रखिए. अरे न्यूटन के पहले भी एप्पल गिरता था. एनीवे आई टेक दैट. भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया. एनी अदर आंसर? चलिए छोड़िए. आई डोंट नो किसने बनाया है, लेकिन मुझे एक चीज 100% क्लियर है. कैन आई एक्सप्रेस? मैंने नहीं बनाया. ये तो 500% क्लियर. अब भगवान जी ने बनाया नहीं बनाया, आई हैव नो आइडिया. वी कैन थिंक अबाउट इट, बट आई डिड नॉट क्रिएट इट फॉर श्योर. When I say I did not create it, it means you have not created it. It means it's not a human creation. It's not artificial intelligence creation. It's not science and technology. Yes or no? It's not physics. It is not something like that, right? Earth is there. उसमें मास है. आप लोग ज़्यादा जानते हैं. It will pull everything down to a limit. It may little vary with altitude. ठीक है? मेरे अनुसार gravity is truth. Two criteria for truth. One, it's an always sunset. गिरीश का लाइफ स्पैन 100 years, 100 years भी ज्यादा है, 180 years. जन्म के समय पे भी ग्रेविटी, मरने पर भी ग्रेविटी, और हजारों साल जब से अर्थ बना हुआ है तब से ग्रेविटी, जब तक रहेगा तब तक ग्रेविटी. यू कैन कॉल इट एज इटर्नल, राइट? यस. नंबर 2, ट्रुथ इज यूनिवर्सल. सबके लिए समान होना. मेरे लिए सही अलग, आपके लिए ट्रुथ अलग, मेरे लिए ट्रुथ अलग नहीं हो सकता. वन ट्रुथ. यस और नो? महिलाओं के लिए 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पुरुषों के लिए 6 मीटर पर सेकंड. अमेरिकन के लिए नो ग्रेविटी. बांग्लादेश वालों के लिए 50 मीटर पर सेकंड. सॉरी फ्रेंड्स, इट डजंट डिस्क्रिमिनेट. वन लॉ, समान. According to me, just I'm setting an analogy. Gravity is truth. Yeah. Now I'll make life complicated, and that's where the need for spirituality comes in. Gireesh doesn't like gravity. मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं परेशान, मैं दुखी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मेरे को एंजाइटी अटैक, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है भाई साहब, मेरा बीपी चढ़ जाता है. तो शायद आप लोग वहाँ बैठ के सोच रहे होंगे तेरे को क्या प्रॉब्लम है ग्रेविटी से. मैं बताऊँ ग्रेविटी से क्या प्रॉब्लम. And this really happened to me. At times, you know, my travel schedules are very tight. So I was doing a program in Zahirabad, Mahindra & Mahindra International Tractors Division. It's in Telangana. वहाँ का जो ट्रैक्टर्स है ना वो इंडिया में आप नहीं देख सकते. It's all exported अमेरिका में. So I was doing a program for the senior management. Finished my program. I got a call from Mount Abu कि आपको कल प्रोग्राम में आना है. मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ because third day I have to have a program with the Federation of Gynecological Society of India, पटना. मैंने कहा I can't come. They said कब है आपका? मैंने कहा परसों है. बोला कल तो फ्री हो ना? We will make all the necessary arrangements. And it was workable. I said fine. I started. Please listen to me carefully. I started from Zahirabad at 1 at night. By road, I reached Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad. The next day morning, took a flight to Ahmedabad. वहाँ से 6 hours drive. I had my breakfast there in the center. 6 hours drive to Mount Abu. I reached at around 2 p.m. Had my lunch. 4 o'clock one session, 6 o'clock another session, 8 o'clock dinner. Again drove down 6 hours back to Ahmedabad. वहाँ से third day मेरा पटना का morning 7 o'clock flight. 2 nights I did sleep. I was tired. I was on the move. And the third day मेरे को थोड़ा लग रहा था मैं उठ नहीं पाऊँगा. Alarm वगैरह set किया. But as I feared, when the alarm rang, I had only 15 minutes to reach the airport. 1 hour before takeoff. Oh my God! I rushed to the bathroom. और पता नहीं क्या हुआ, जल्दी में मैं फिसल गया बाथरूम. And I injured my shoulder. I had severe pain. My question to this wonderful audience: मेरे दर्द का कारण कौन? एंजाइटी. क्या चीज? एंजाइटी. मतलब
fear timing का नाम बताओ अपना, क्या है? दीपक। तुमको भावनाओं की तो कोई कदर नहीं। मैं अपना दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ, ये बोलता एंग्जाइटी। अरे थोड़ा तो मेरा, एक तो यहाँ का दर्द है, ऊपर से तुम यहाँ भी दर्द दे रहे हो। किसने कहा ग्रेविटी? सर क्या My dear wonderful audience, मैं 2 nights did not sleep, fact. I was tired, fact. I got up late, fact. I rushed to the washroom, fact. I started doing everything in hurry burry, fact. The water on the slippery floor made the floor more slippery, fact. I did not concentrate, मैं ध्यान से नहीं था, fact. I slipped, fact. गिरा क्यों? gravity क्या बात है दीपक? अरे हवा में ऐसे ऐसे फ्लोट करता था, चोट नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं? पता है कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सर आपका एक ढीला लग रहा है। पहले से ही लग रहा था, अभी तो कंफर्म भी हो रहा है। What rubbish, what crap you are speaking? I mean, I can justify anything, that's how I'm thinking, that's how I'm interpreting things. ठीक है? So please, मेरे को आपको बता देना, मेरा प्रॉब्लम ग्रेविटी है। I'm from Mumbai, you come to Mumbai, I'll be the host. हम लोग बहुत मुंबई घूमेंगे, इतना अच्छा नहीं है मुंबई, आपको मैं लोकल ट्रेन में जरूर घुमाऊंगा, ठीक है? और लोकल ट्रेन में 7 रुपए में फुल बॉडी मसाज, आपको मौसम के। और कभी कभी हम लोग जब ट्रैवल करते थे ना, तो मैं अपने सामने ना हल्की इतना ह्यूज, मैंने कहा सर क्या है? मैंने कहा सर सुनिए तो सर, बोला बोलना। मैंने कहा सर थोड़ा अपना पाँव है ना बाजू में करी, अंगूठे का हो गया है, थोड़ा बाजू वाले का चालू रखिए। He is standing on my foot. नम हो गया मेरा अंगूठा, मैंने कहा सर थोड़ा साइड में करिए ना, वहां का मसाज हो जाएगा। ये तो हाल है। Anyway, मुंबई के लोकल ट्रेन में इतना भीड़ होता है, कुछ सेकंड्स ही रुकता है। मेरा वैसे ही लैपटॉप बैग, मेरा खाने वाला बैग, हम नीचे उतर रहे, लोग चढ़ रहे, किसी का पता नहीं कंधा का हाथ था मेरे चश्मे में लगा, चश्मा नीचे, इससे पहले आई कुड होल्ड इट, वो नीचे, आई मीन रुक। 5,000 रुपए के चश्मे का नुकसान का कारण कौन? क्या बात है, आप इतने अच्छे हो। ग्रेविटी नहीं होता था, हवा में ही रहता था, एक बड़ा दिक्कत। अब आपको पता चल गया मेरा प्रॉब्लम क्या है ग्रेविटी से। समाधान बताइए, सॉल्यूशन बताइए। I want to lead a happy life, रात को सोना चाहता हूँ आराम से, but I can't sleep. What do I do? make good plans. Do good. What's your name? Ritesh Kumar. Ritesh Kumar. R. Ritesh, too good. और किसी ने कुछ कहा? बोलिए। Make plans considering universal truths. Make a plan considering university tools. Universal truths. Universal truth. Okay. Wonderful. Too good. I tell you. ठीक है ना? I was doing a program in Indian Medical Association Chennai. All doctors. तो और अच्छा था। मैंने कहा सर कोई दवाई दे दीजिए। So there was one person. उन्होंने कहा मेरे पास दवाई है आपका। मैंने कहा बहुत अच्छा। एक और मैडम थी, शी ऑल्सो। मैंने कहा पहले सर का सुन लेते। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर आप किस चीज के डॉक्टर हैं? तो उन्होंने कहा मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैंने कहा ठीक है सर आप दवाई दे दीजिए। उन्होंने कहा माय स्पेशलाइजेशन इज टोटल नी रिप्लेसमेंट, की होल सर्जन। मैंने कहा सर जिंदगी में कई बार पेट दर्द किया है, सिर दर्द किया है, बदन दर्द किया, घुटना दर्द आज तक नहीं किया। एनीवे आप क्या समाधान बताएंगे? उन्होंने कहा गिरीश जी मैं आपका दोनों घुटना रिप्लेस कर दूंगा। मैंने कहा सर मुझे ग्रेविटी से प्रॉब्लम है, घुटना चेंज करो। बोला आपकी बातें सुन के लग रहा है आपका दिमाग घुटने पे आ गया। मैं क्या रिप्लेस फ्री में करूं? मैंने कहा ये कहां से लोग आ जाते? मैंने कहा मैं आपके पास गलती से भी नहीं होगा। आई सेड मैडम बताइए। मैंने कहा आप किस चीज के डॉक्टर वो पहले बताइए। शी सेड आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। ये ठीक है। शी सेड मैं मनोरोग चिकित्सक हूँ। मैंने कहा बोलिए मैडम। उन्होंने कहा 2 दवाई है मेरे पास। मैंने कहा बीमारी ज्यादा है क्या? एक से ठीक नहीं होगा, दूसरा भी खाना पड़ेगा। बोला नहीं पहला वाला ट्राई करिए, एसओएस ठीक ना हो तो दूसरा खा लीजिए। मैंने कहा बताइए पहला वाला। उन्होंने कहा भर्ती हो जाओ। आप क्यों हंस रहे हैं? कहाँ भर्ती हो जाओ? अभी तक जवाब नहीं दिया 1 घंटे से, इतना जोर से बोल मेंटल हॉस्पिटल। मैंने कहा मैडम वो मेरा घुटना चेंज कर रहे हैं, आप मुझे मेंटल हॉस्पिटल। आई मीन आपके पास कोई अच्छा आंसर नहीं है क्या? यू नो व्हाट शी टोल्ड मी द सेकंड आंसर? बोला नहीं एडमिट होना है ना,
Then take the second medicine. And the second medicine, Ritesh, you're bang on target. She told me, accept it. Friends, let me tell you one reality. Truth को स्वीकार करने के अलावा second option नहीं है. Either you are admitted or accepted. There is two absolute extreme scenario you have. Can I ask you a question? Can you clap for yourself once? Clap. Good. Clap क्यों किया? कमाल है. आपने बोला आपने clap करेंगे. So simple. पता आपने clap क्यों किया? Because you are any time more wonderful than Gireesh. इस hall में या auditorium में, there's only one person who is insane. Rest of all of you, your entire lifetime, this birth, you are 17 years, 18 years, 20 years, 50 years. आपको कभी भी ग्रेविटी को लेके गुस्सा नहीं आया. आप में स्वीकार करने की ताकत है. Yes sir. आप चल के जा रहे थे, आपका पाँव मोच खा गया, किसी ने पूछा आपको पैर में क्या हुआ, अरे मेरी गलती थी ना, मैं ध्यान से नहीं चल पाता. हाँ, कभी भी आपने कहा ग्रेविटी? हेलो, नहीं ना. You know the good news is each one of you, barring me, you have the power to accept things as they are when it comes down to gravity. Can I ask you a question? अपने past को accept किया? Don't tell me. The unknown future, nobody knows. स्वीकार किया? Why are you getting worried? The bad experiences, someone cheated you. Someone did not favor you the way you had favored the other person. Accept किया? All the first 2-3 rows. पत्नी को स्वीकार किया? पत्नी को स्वीकार, बच्चों को स्वीकार, ये टकलू सेल को स्वीकार किया, अपने नाक को स्वीकार किया, स्किन के कलर को स्वीकार किया? नहीं किया हो परसेंटेज में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैडम जोर से बोलिए कहाँ एडमिट होना है? मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था एडमिट होना, और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा पागल खाने के. बहुत हम्बली कह रहा हूँ, हम सब भर्ती के लायक हैं फ्रेंड्स. जो है जैसा है उसको स्वीकार करने की ताकत, वहां से शुरुआत होती है साइंस भी और स्पिरिचुअलिटी भी. स्वीकार तो करिए पहले. ट्रुथ है फ्रेंड्स. You just cannot do anything of your past. You just cannot get worried about your future. You can plan. Please plan. Planning means your mind is at ease, is at peace, and you can. Yeah. और यहाँ से शुरुआत होती है स्पिरिचुअलिटी. The first truth. अगर आपने कल क्लास अटेंड किया हो, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा. If you can understand it and can make the presence of the soul in each and every activity. I remember myself going to a company to take a program. So the HR manager was sitting in front of me. मैंने कहा सर सेल्फ मैनेजमेंट, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है. मैंने कहा सर प्रोग्राम कर लेते हैं, कुछ लोगों को बिठा दीजिए. उन्होंने कहा नहीं, आज नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे. I'll organize it. I said सर वो भी कर लेंगे ना, मैं आया हूँ तो 2 लोगों को बिठा दो, 1 प्रोग्राम हो जाएगा. He didn't agree. मैंने कहा ठीक है. I exchanged all pleasantries, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, and I was just walking out of his cabin. जाते जाते मैंने उससे एक प्रश्न पूछा. I'll ask you the same question. I asked him, sir, who are you? ये who are you का ना एक दूसरा कॉनोटेशन भी है. तू होता कौन है? आप कौन है और तू होता कौन है? उन्होंने तू होता कौन है को पकड़ लिया. तो आया गुस्सा. His eyes popped out, stood pinpointedly, raised his voice and said, Mr. Gireesh, don't you know I am the HR manager of this company? वो बता रहे थे बेटा तू किसी के पास भी चले जा, तेरे को कार्यक्रम नहीं मिलेगा. मुझको पूछता है कौन? मैंने वेरी हम्बली मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा सर आपके पोजीशन का विवरण आपके डेजिग्नेशन बोर्ड में लिखा हुआ है आउटसाइड द डोर. आई एम आस्किंग यू हु आर यू, यू आर टेलिंग मी व्हाट यू डू. किसी को भी पूछो कौन हो? इंजीनियर. माँ के गर्भ से निकलते साथ इंजीनियर थे क्या? सत्य. ऑलवेज. यू गॉट अ सर्टिफिकेट, दैट्स योर प्रोफेशन.
कौन हो? डॉक्टर। कौन हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सॉरी फ्रेंड्स, डूइंग और बी को मिक्स कर दिया, दैट्स वेयर द होल इग्नोरेंस इज। मैंने कहा सर वो तो आप करने वाली चीज है, आप कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम फलाना फलाना है। मैंने कहा सर जी वो भी लिखा हुआ है, आप शर्मा हो, वर्मा हो, पाटिल हो, पटेल हो, नायर हो, पिल्ले हो, चैटर्जी हो, भट्टाचार्य हो, सिंह हो, आलूवालिया हो, राव हो, रेड्डी हो, अग्रवाल हो, श्रीवास्तव हो। मैंने पूरे भारत को कवर करने का प्रयास किया, किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी। Can I ask you a question? In your culture, I mean, भारत का कल्चर भी थोड़ा ट्रेडिशन डिफरेंट होता है every 200 किलोमीटर। Please tell me, in your tradition, बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद नाम रखा जाता है? 21 दिन। 20 दिन तक आधार ही नहीं है भैया का। छोटू doesn't exist, but he is there, he or she। अरे हरीश, मनीष, सतीश, लतीश, गिरीश है वो तुम हो ही नहीं भैया, 21वें दिन ही तुम एग्जिस्ट करोगे। क्योंकि मैंने पूछा कौन हो, तो कहा उन्होंने सतीश। तुम 20 दिन तक कौन थे? तुम तो नाम ही नहीं। नामकरण आपको मैं पूछता हूँ, आपके पास कौन सी गाड़ी है? आप बोलोगे कि MH48AF6801। हेलो भैया, वो रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो यूनिक होता है। गाड़ी कौन सी है? हमारा भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, गिरीश, मनीष, लतीश, सतीश। आप कौन हो? पता है उन्होंने क्या कहा? बोला पता चल गया मैं कौन। मैंने बताइए, बोला हिंदू हूं। मैंने कहा सर वो आपका विश्वास है, आप राम को मानते हो नहीं मानते हो, अल्लाह को मानते हो नहीं मानते हो, जीसस को मानते हो नहीं मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कब पूछा कि आपको वेयर इज योर फेथ? आई एम आस्किंग यू हु आर यू, यू आर टेलिंग मी अबाउट योर विश्वास। कौन है आप? उन्होंने कहा पता चल गया कौन। मैंने बोला गुजराती हूं। मैंने कहा सर वो आप सिटी द स्टेट वेयर यू योर मदर टंग, आप महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, पंजाबी है, कन्नड़िगा है, बंगाली है, दैट्स योर लैंग्वेज, योर लाइनेज। मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है? सिंपल, हु आर यू? एंड यू नो फाइनली गेव मी अ खतरनाक आंसर। आई जस्ट कुडंट स्टॉप माय लाफ्टर। मैंने कहा कौन है? आई kept on telling me, I kept on relating. Finally he told me, you know कौन? मैंने बोला कौन है? उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन। मैंने कहा बताइए। बोला पुरुष हूँ। मैंने कहा सर कॉमन सेंस है, देख के समझ में आता है पुरुष है या स्त्री है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कौन है, आप अपने शरीर के बारे में बता रहे हो, जेंडर। I'm not a stupid Gireesh female 48 years. Railway reservation for just some organs here and there. That's the nature. मैंने कहा सर आप कौन है बताइए ना, you're telling me about your body. He entered into philosophy. Philosophy बच्चों इतना खतरनाक होता है ना, सुनने वाले तो छोड़ो, कभी कभी सुनाने वाले को भी नहीं समझ में आता वो सुना क्या रहा है। मैंने पूछा कौन है? बोला पता चल गया कौन है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा जो मैं हूँ वही हूँ मैं। What? बोला जो हूँ वही हूँ मैं। मैंने कहा ये जो कौन है? क्रिश्चियनिटी में फर्नांडस जो नाम भी होता है, JOE। आइदर हु इज दिस जो? बोला जो दिख रहा हूँ वही हूँ मैं। आइदर जो दिख रहे हो वो भी नहीं हो। Then you know what he told me out of sheer frustration? उन्होंने कहा तू बता मैं कौन? अरे मैंने कहा सर आधा घंटे से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, how do I know who you are? You know what he said? Come in. मुझे दरवाजे से अंदर बोला take your seat. I sat in front of him. He stood up, went to the door, latched it. चिटकनी में हाथ रखा, बोला जाने नहीं दूंगा, बता मैं कौन। सर आप किडनैप कर रही हो? अब तो आए तो आप अपने साथ जीवन जियो, 45 साल हो गया, you are telling me. If I ask you a question, who are you? The moment I ask you about who are you, you're speaking about your profession, you're speaking about your doing, you're speaking about your roles, you're speaking about your responsibility, you're speaking about caste, creed, nationality, religion, state, language. Yeah. बॉडी हो या नहीं हो? बॉडी है या नहीं है? ठीक है। कल मैम आपका नाम क्या है? प्रीति मैम। प्रीति मैम ना टुडे इज द सेकंड डे, ठीक है ना? लेट अस अज्यूम थर्ड डे आल्सो वी मीट, ओनली अज्यूम, आई विल नॉट कम, ठीक है? थैंक यू सर, दिल की बात कर दी आपने, ठीक है ना? सो थर्ड डे आल्सो प्रीति मैम कम्स एंड सेज, पता है मुझे कैसे डेजिग्नेट की? ऑनरेबल गिरीश, बीके गिरीश, डॉक्टर गिरीश, प्रोफेसर गिरीश, श्री गिरीश, क्या क्या तो भी बोल देते हैं। Tomorrow Preeti's madam comes here and says, my dear friends, we have
Girish body here. I request Girish body to come and stay and deliver your entrance. आपके घर में आपका बच्चा बोले मम्मी बॉडी जरा नमक देना, पापा बॉडी जल्दी तैयार करो, लेट हो जाती हूँ मैं बॉडी, तो फिर टीचर बॉडी प्रिंसिपल बॉडी को कंप्लेन करके मुझ बॉडी को मुर्गा बॉडी बना देते हैं। What rubbish! Can I ask you a question, friend? Simple question. बॉडी शब्द का इस्तेमाल कब होता है? अभी तो गिरीश जी, कौन है ये गिरीश? किडनी, हार्ट, नाक, आंख, टक्कू, सिर, किसको आप बोल रहे हो गिरीश गिरीश गिरीश? क्योंकि उस डेड बॉडी, लेट अस assume next 1 second with a massive cardiac chest arrest, gone. This is dead. You come and do a CPR, you couldn't revive Gireesh. Heartbeat stop, pulse stop. You call a doctor, a medical guy, he tests this and says gone. So you have the same Gireesh, dead body Gireesh, same trousers, same Skechers shoes, same chashma, same takusir, same face. Gireesh ji, hello. कमाल है, यही नाक रहेगा, अभी भी यही नाक है, वहां भी यही नाक है। वो गिरीश जी से अभी बॉडी हो गया। I'll speak about science, friends. I'll speak about spirituality. I'll speak about truth. इस संसार का कोई मेडिकल डॉक्टर, इंडिया का और यहाँ ओडिशा का नहीं, संसार का कोई डॉक्टर एक डेड बॉडी को उसके नाम से कभी डेजिग्नेट नहीं करेगा। मैंने नहीं बनाया मेडिकल साइंस, मैंने नहीं सिखाया मेडिकल साइंस में कि आप डेड बॉडी को उसके नाम से संबोधित नहीं कर सकते हो। This is not mine. This is how it is. The truth. But then are we understanding the truth? और यहाँ तो फेयर एंड लवली लगा लगा कर हम लोग HUL कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आत्मा को भी तो, कौन गया? अभी डेड बॉडी है, गिरीश कहाँ गया? हेलो, गिरीश कहाँ गया? आप फोन करके बोलोगे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कब होगा, डेड बॉडी को कब पोस्टमार्टम के लिए लाया जाएगा, डेड बॉडी को कब दर्शन के लिए रखा जाएगा, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कब होगा? अभी आप मुझसे पूछो गिरीश बॉडी जी आप कब जाएंगे? आप दूसरा गिरीश कब बॉडी जी आप? मैं तो आपको PIL सूट कर हाईकोर्ट डिफर्मेशन कोर्ट में क्या क्या चल रहा है। I mean that is defamatory. How can you call me a body? Then who is this Gireesh ji? Who is Vice Chancellor ji? Who is Preeti ji? Who is Deepak bhai? Who is Deep? कौन है ये? नाक? I'll give you still more further example. गिरीश तो गॉन, बच गया बॉडी। वो एक स्टूडेंट ने हमारे सर के पास बोला सर मेरे को इनसे प्रश्न पूछना था, एक सेल्फी भी खींच ली। सेल्फी का जमाना है। सर ने कहा भैया गए, बोला मेरे को प्रश्न तो उत्तर दिए बगैर चले थे। सर ने भी कहा मुझसे पूछते तो मैं कहता कल जाओ, कंप्लीट करके तो जाओ आज तक क्लास, इतना भी जल्दी क्या था, और यही स्टेज पे ही जाना था, वो तो गया बिना पूछे। So this boy comes, lies next to the dead body. गिरीश के चश्मे में से आंखें ऐसे खोल, डेड बॉडी, चेहरे को मुस्कुराहट और सेल्फी। Can I ask you a question, friends? Would you click a picture with a dead body? Hello? No. And he sends WhatsApp message, myself with Professor Gireesh International, blah blah blah. आपको WhatsApp में पिक्चर देख के समझ में नहीं आएगा डेड बॉडी है, समझ में आएगा क्या? ना। लेकिन डेड बॉडी के तो हम 2 किलोमीटर दूर से कूद आया घर में मम्मी पूछेगी जल्दी क्यों आ गए? अरे वो गया डॉक्टर कलाम की तरह स्टेज से। मम्मी बोली बाथरूम में कपड़े सहित। अब यहाँ हाथ मिला रहे हैं चिपक के फोटो की सेल्फी में, तो यू टच। किसको आप सम्मान दे रहे हैं? कौन है ये गिरीश जी? The energy, yes, the soul, as you say, but it's very theoretically soul connection to the supreme soul. In my practical 24 hours, how much I was soul conscious while I was studying, while I'm preparing for my exam, while interacting with others. वहाँ तो सब soul नहीं है, वहाँ तो body conscious ही है, ठीक है? Friends, please, it will really help you, because the self का confidence, kidney confidence, liver confidence ऐसे कोई शब्द नहीं है. Please make the consciousness of the soul an integral part. I will just finish one story. I'll show you a video. We'll finish it off today. Okay? Yeah. It goes like, it's a true story, friends. I think you might have seen this. Maybe you might have read it. 23-year-old girl, outskirts of Lucknow, I mean interiors of Lucknow. She's a national player of volleyball and football. And this girl has no power.
बहुत ध्यान से सुनना, और हम इन 5 पावर के पीछे, हाथों के पीछे पड़ गए थे. This girl has no money power. You and I are obsessed with money. Please have money, but don't make it very hard. There's something more beyond that. Second, this girl doesn't have beauty power. I'll show you the video. Yes, you should appear good, but that's not everything. This girl doesn't have intellectual power. She's not an engineer or a chartered accountant or a doctor like you and me. ये लड़की अंग्रेजी नहीं बोल पाती है, इसका क्वालिफाइड, पढ़ी नहीं है, घर वालों के पैसे ही नहीं है हायर एजुकेशन. इस लड़की के पास मसल पावर, नॉट शी इज नॉट वेल बिल्ड. एंड इस लड़की के पास नेटवर्किंग पावर नहीं है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ हू के साथ बैठो, कुछ प्रॉब्लम है तो दे विल हेल्प यू. नो पावर. वी ऑल वांट टू क्रिएट गुड नेटवर्किंग स्किल्स. गुड. शी इज ट्रैवलिंग इन अ जनरल कंपार्टमेंट फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली to write the exam of CISF, and she is in the Chalu Dabba unreserved compartment. When the train is passing through Raebareli, a district in UP, at around 10, 4 boys enter into a compartment with all the wrong intentions, and they start looting and snatching people. Watches, gold, necklace, cash, mobile, anything worth, they will just loot it. इस लड़की के गले में पतला सा चेन था, और वो एक लड़का ने सीधे उसके गले में हाथ डाला. She being a sports person, she resisted, और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा तेरे को जो नाटक करना है ना दूसरों के साथ करना प्लीज. I mean, she had the guts to at least fight it out. वो लड़के ने कहा अच्छा तो हमारे साथ दुश्मनी होती है. उन्होंने बाकी तीनों को बुलाया. 4 boys versus 1 girl. They hold her, drag her, and they bring her to that 2 exit doors and a toilet area where you have little space. 2 boys hold her hand and she can't move an inch further. The 3rd boy, very sarcastically, whispers into her ear, snatches the chain, and उसके कान में कहता है, देख अब तेरे साथ क्या करते हैं, look what are we going to do with you. You protest, this is what is going to happen. The 4th boy kicks her on her stomach. Friends, you are kicked on your stomach for 2 minutes, you will lose what is happening. And she has no idea what's happening. You know what the 4 boys do? They open the door of a running train, lift her, and they throw her out of a running train. She's literally thrown out of a running train. And as luck would have had it, when she's thrown out of a running train, she just doesn't fall outside. She's hit by another train which is coming from the opposite direction. More impact. And within no time, everything has happened. She's lying between 2 tracks, Lucknow, Delhi, Delhi, Lucknow. And as per the record of the Indian Railways, this happened at 10 at night, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 hours later, the next morning, villagers see a dead body between 2 tracks. And upon examination, they realize she's not dead, she's still breathing. 9 hours. And as per the record of the Indian Railways, 49 trains went by. I pick you up. आपको अभी सिर्फ भी दर्द नहीं कर रहा है. आपको यहाँ संबलपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूर रेलवे ट्रैक के बाजू में मिलता है, अगर एक स्पीडी ट्रेन को राजधानी को जाने को, probably I'll faint, friends, heart attack. This girl survived 49 times, and every time a train would go by, she'll regain consciousness. She'll scream, bachao, bachao, गाँव दूर था इतना आवाज था, and again she'll dip down to unconscious. The whole night she was bitten by rats. चूहों ने उसके कटे हुए अंगों को कुतरा, and she couldn't move. She had lost 1 leg below the knee, 2 pieces, complete fracture of the spine. Government of India, I mean, she's taken to the government hospital Raebareli. Anesthetist नहीं है, गायब है. वो कहती है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जीना चाहती हूँ. Look, 1 power, friends. मैंने बिना एनेस्थीसिया के 9 hours सर्वाइव किया. Whatever you want to do, treat me. आपकी उंगली कट जाए ना फ्रेंड्स, कितना दर्द होता है. You have lost 1 leg, and without anesthesia you've been treated. Becomes a big story. What happened to the girl in Delhi, prosecutors, women, blah blah blah, Women's Commission, and the government of India. Parliament चलने नहीं देता है, and she is brought to All India Institute of Medical Science. At least she can be treated well. The government of India officially announces what happened. 150 crore Indians wanted a response from the government of India. क्या हुआ? And the official spokesperson speaks to the media. And you know क्या कहता है? ये लड़की झूठ बोल रही है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल मौजूद था. He was on duty. एक चश्मदीद गवाह नहीं है. Not one single eyewitness. किसी ने नहीं कंप्लेंट किया. She is just concocting some story. और पता है ये क्या कह रही है? ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी. जब टीसी ने टिकट पूछा बचने के लिए, she attempted suicide. And क्योंकि अब ये अपाहिज हो गई है, Government of India is compensating her with 25,000 rupees. I tell you the climax, friends.
this girl challenged the government of India 2011 and said, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, उन्होंने कहा भिखारी नहीं हूँ, मेरे एक कटे हुए पाँव की कीमत 25,000 रुपए की हो सकती है, it's more valuable. I refuse to accept 25,000 rupees. In 2 years' time, 21st May 2013, Arunima Sinha goes on to become the first women amputee in the world to climb 8,800 meters. The first Indian. She had an option. Because I started with a choice. She had an option. जिंदगी भर पुरुष जाति से नफरत कर सकती थी, भारत सरकार को जिंदगी भर गाली दे सकती थी, अपने किस्मत को रो सकती थी, भगवान ईश्वर को गाली दे सकती थी. The thought that negative, positive, she chose the positive one. And look what she has conquered 7 top mountains in the world. Government of India, Virat Kohli, Deepa Karmakar, and Arunima Sinha, Padma Shri. 2 साल पहले एक पाँव की कीमत कितनी थी? 25,000. From 25,000 to Padma Shri. Last statement, friends, and it is her quote, and I'll show it to you. Sorry, Rana. You know what she says? And this is what I'm saying. Maybe science बहुत ज़्यादा मन की शक्ति को यूज़ करता है, स्पिरिचुअलिटी भी यूज़ करता है, लेकिन मन की शक्ति को बाहर यूज़ करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आध्यात्मिकता अंदर की टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज करता है, अपने अंदर का आत्मबल, मनोबल, वो वैल्यू सिस्टम निकलता है. और पता है ये महिला क्या कहती है? बहुत ध्यान से सुनना बच्चों. विकलांगता, अपाहिजपना, डिसेबिलिटी इधर से नहीं होता. And I have a question. In 24 hours, what do you do to enhance and empower the mind? And if you think Netflix is doing it, I'm so sorry to say, the science of positive psychology says it's pleasure, it's not happiness. Pleasure will only release dopamine. You drink alcohol, dopamine. You take drugs, it is dopamine. You have sensory pleasures, dopamine, dopamine, dopamine. I don't say it, neurologists will say. Happiness is serotonin. And every time you are correlating pleasure to happiness, but आपका body को नहीं समझ में आ रहा, वो तो dopamine, 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 dopamine secretion, 100% it will lead to addiction. Whether it is smoking, whether it is drinking, whether it is Netflix, whether it is GP, whether it is number of like, whether it is gulab jamun, whether it is the kind of dress, whether it is appreciation, whether it is award, whether it is reward, it's all falls under one category, friends. It is pleasure. And जितना ज़्यादा pleasurable experiences और गलती से भगवान ना करे आपको वो ना मिले तो withdrawal symptoms. अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान, ये अंदर का मन की स्थिति है. एंड आप जाइए साइंस के पास, वो सीधे आपको एंजाइटी फील दे देगा, वो और कॉम्प्लिकेट क्रिएट करेगा. कैन यू डेवलप समथिंग मोर इंटरनल? ठीक है? एनी क्वेश्चंस? आई नो यू वुड नॉट लाइक टू आस्क. ठीक है, तो जस्ट फिनिश करो, बोलो दीपक. Sir, you told that the main use of spirituality is that to make our lives more happy. Okay. But it is found that God sometimes puts us to test and makes our life difficult on purpose so that we can learn something if we approach the spirituality more. So what are your views about it? Yeah. God doesn't do. It's your thought process which you think that God is doing it. And the premise of your question is coming because we all fear God. God is our father. पापा कभी भी अपने बच्चों को डराएगा नहीं, हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा आपको साथ देगा, हमेशा आपको रिसोर्सफुल बनाएगा. आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके पीछे का जो आधार है, दैट इज योर कार्मिक अकाउंट और व्हाट यू डू इन द पास्ट. और मे बी लाइफ वांट्स टू, so instead of calling God, I say life or opportunities is making you handle a particular situation so that you improvise. सचिन तेंदुलकर को अपोजिट वाला टीम सीधे गेंद डालेगा या खतरनाक गेंद डालेगा? Because you are सचिन तेंदुलकर. हरभजन सिंह को ऐसा भी बॉल डालेगा तो भी ठीक है.
So if you consider you are such information fulfiller of your life, the opposition is going to yorker like game or maybe a full toss or maybe a outswinger. Now it is your capacity, your competency, your skill, your ability, your love for the game of cricket, your technique, your practice to hit even a yorker like game for a 6-7 4. You have no choice. Yeah. So challenges you have to take it as an opportunity. Again, your positive mindset. Okay. So can we do 1 minute of meditation? Yes, sir. Yeah. Sit straight. I want you to close your eyes. Although meditation is not done with the eyes, but still close your eyes. Yeah. Hello, take your seat. I love backbenchers. I myself was a backbencher. वो दो दुनिया में जीते हैं, सामने वाला जो भी चल रहा है उनका अंडर द टेबल भी चलता है. Keep it up. Close your eyes. Yeah. The next couple of minutes, tell yourself, I have an appointment with myself. This is me time. अगले कुछ क्षण मैं स्वयं के साथ कुछ अच्छे पल हम बिताएंगे. अपने मन को कहो, हे मन, प्लीज भूतकाल में भी नहीं जाइए, भविष्य में भी नहीं जाइए, मेरे साथ अभी इस वक्त यहाँ पर रहिए. I want you to pay attention to the vibrations, to the sound, and anything, any sensation that's happening around you. Please feel the temperature of this auditorium. Little tranquility surrounding this auditorium. धीरे से withdraw your attention and mind from the external to the sensation in the body. Feel the seat on which you are sitting, your heartbeat, the breathe in and the breathe out, or any other sensation. Slowly withdraw your attention still further inside, and in the center of the forehead, जहाँ पर बहनें माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं, between the eyebrows, there is a shining star, a bright little shining star. ये मेरा सत्य परिचय है. I am an energy. और जब तक ये है, इस शरीर का इस्तेमाल करके मन बुद्धि के द्वारा इस व्यवहारिक कर्म क्षेत्र पे अपना कर्म करता है. आत्मा का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है. This is a sacred space. And I am very peaceful. अगर आपके मन में कोई दूसरा विचार आ रहा है, please very lovingly, soothingly bring your attention back to the space. और यहाँ पे दो दरवाजे हैं. एक दरवाजे पे लिखा है the past. Please don't enter through this door. Lock it. There is another door. इसमें लिखा है future. You just cannot open it now. What you're left with is a room, and that room is called as the present. Please try to experience tranquility and peace. Be in the moment. No worries. No to-do list.
no future, no past. I am peaceful, very relaxed. I feel good. महसूस करें आपके सर के ऊपर another bright divine point of light जिसको हम गॉड कहते हैं और गॉड से बहुत शक्तिशाली शांति की किरणें मुझ आत्मा को स्पर्श करते हैं। I am getting recharged. My battery is getting recharged with God's power, peace, love and happiness. Now, मेरा आत्मविश्वास आत्म पर भरपूर मात्रा में भगवान को दिल से धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, टीचर्स को, स्वयं को, और अपने अंदर ये दृढ़ प्रतिज्ञा करिए कि आज से हम कुछ समय निकालकर आत्मा को बलवान बनाएंगे। Little time for the soul, little time for positive thinking. Visualize that my future is very bright. Not only in terms of qualification, job, money, but also in terms of peace, happiness, integrity, sincerity and dedication. I have a real bright future ahead. In these moments of peace and tranquility, धीरे से अपनी आंखें खोलिए. Open your eyes. Open your eyes. Look at both your hands. आपके पाँव को देखिए. Feel that peace and happiness and rub your hand gently and slowly. Put it across your entire face, your forehead, eyes, nose, cheek, chin. Good. पैर नहीं दबाइए. सदा पैर रहना और सदा लंबी रहना. Thank you so much. I really enjoyed interacting with you. I wish a very bright future for all of you. Complete health and unlimited happiness and values to you, to your beautiful family back at home, and all success to this beautiful, wonderful university, engineering college. I have a lot of good wishes for each one of you. Wishing that all our life will be very bright, very beautiful. Maybe it will be full of challenges, but I have the necessary strength to face it head on. Thank you. I put on record my sincere thanks and appreciation to Honorable VC Sir, esteemed teachers, and my wonderful students. Thank you. Om Shanti. मुस्कुराते बोलिए. Thank you, sir. Thank you for your beautiful thoughts. Sir, I don't know, I may be wrong, but what I learned that spiritualism is the mother of modern science, isn't it? Thank you, sir. So I would like to request Honorable Vice Chancellor, sir, please come to the dais and please give token of thanks to sir.
to say something. Good evening to all of you. In fact, my sincere thanks and I don't know how in which words I would appreciate the whole team like Gireesh and yesterday Madam Deepa, I think. Deepa. So this three in fact was a really wonderful time this time. 6 o'clock to almost 1 hour class. And the way they have made us, there is a mesmerizing talks, the discourse that they, the realities, the experience they have described. I hope all of you have enjoyed, and let us practice it into our own life. I'm sure all of us will get benefited, will make this world a and our life will be better. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. We want a photograph, so I requested all students and dignitaries present here, please come to the dais and we will take a group photo. Please just stand up and take a smile. Just stand up.